Why the civil word comes in both, in the engineering also and in the civil services also? So despite taking so much initiative for the overall development of the economy, uh, what is the per capita income ranking of Uttar Pradesh? अच्छा, मान लीजिए आप कहीं पे SDM है, तो वहाँ पर कोई एक न्यूली अपॉइंटेड महिला लेखपाल आपसे शिकायत करती है कि एक पर्टिकुलर नायब तहसीलदार हैं, वो उसको इंडिसेंट SMS भेजते रहते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, और फिर वो एक दिन किसी व्हीकल में जा रहे थे ऑफिशियल वर्क से, उन्होंने उसे टच करने की भी कोशिश की, वो रिटर्न में आपको एप्लीकेशन देती है. नाउ व्हाट वुड यू डू? Introduce yourself. So I'm an engineering graduate and I graduated from civil engineering from GB Pant University in 2016. Slightly louder. Okay, sir. So thereafter I worked as an assistant engineer in UP Jalnigam, and so since then I've been preparing for state services. What is your subject in engineering? So civil engineering. You are civil engineer. Yes, sir. Okay. So you are a civil engineer, you are coming to civil services. Yes. The civil word is common. Why the civil word comes in both, in the engineering also and in the civil services also? So both of them deals with public at large, like with facilities regarding the public. Civil engineering specifically deals with engineering structures, and for example, in my case, I was in the department which dealt with water supply and sewerage works, which is an important part of public sanitation. And so civil services, so that also deals with so as a civil engineer, yes, sir. What are you bringing on the table? Yes, sir. What contribution you can make in your job as a deputy collector? So my exposure in my job plus my background during my graduation gave me a new outlook towards problems. So as a civil engineer, sir, my approach would be slightly scientific and strategic, which I also learned during my job, to deal with problems in a strategic way and to look at it from different points of view and to choose the best solution possible. Hobbies? So I like reading fiction, especially historical fiction. Okay. What genre you prefer to read? So historical fiction. Okay. So can you name a few books? The last book that I read was Sea of Poppies by Amitabh Ghosh, and other than that, I also read The Stationery Shop in Tehran by Marjan Kamli. It is said that we learn from history that we never learn from history. Yes, sir. How far do you believe in this dictum or don't believe in this dictum? So it is true. Many of the problems that we've been facing at present are people in the older ages have experienced it, have dealt with it, and fortunately, unfortunately, we tend to repeat the same mistakes, and yet we also learn from them. For example, as we could see during the COVID-19 pandemic, we could see that had already been faced during the Spanish flu, but still we took some things for granted, and yet we learned from it. So that is true that history does repeat itself. What was the period of Spanish flu? So 1918. Any idea how many persons suffered, how many persons perished in India due to Spanish flu? So I'm not sure. Okay. Very good. You mentioned about public sanitation. Yes, sir. You are posted as a SDM in some area. Yes, sir. How do you feel, what can you contribute towards public sanitation? So firstly, this is a problem that has to be dealt across various sectors. Like if we talk about public sanitation, we'll have to take care of the rural areas, the urban areas, the residential areas, the commercial, as well as, which is an important part, the schools and educational centers as well, because we see that sanitation is a big problem when we talk about girl enrollment ratio in secondary and higher classes. So, sir, my first step towards this direction would be to take care of sanitation in schools, so that girls wouldn't have to drop off as they go into higher classes. So secondly, sir, I would take care of the open drainage systems, because that tend to attract some waterborne diseases, and as we see in the slum areas.
So I'll take care of that. And so in the satellite areas, in the adjoining semi-urban areas, so I'll take care of the sanitation part, because as we have a lot of schemes, so I'll try to enforce them properly. Clean drinking water, what are the government schemes and to what extent it has been successful? So clean drinking water, so we have Amrut, Atal Mission for, so that is one of the schemes that is being implemented. It was launched in 2015. That takes care of drinking water needs in urban areas. And so besides that, we have Har Ghar Jal. Yes, sir. So what was the pipe water? There is some scheme? Yes, sir. Yes, sir. So under the scheme, the government aims to provide 100% drinking water, pipe water, to all rural households by 2024. That was the initial aim. Target. How much fund has been allocated to that, and how successful it has been? So I'm not aware of it, but as I've read, a few states have achieved 100% water. So a few smaller states. For example, if I recall correctly, Goa has achieved 100% of its targets. I'm not aware of the corpus. Okay. You are. What do you feel are the barriers in the women empowerment in UP? So when we talk about the barriers, so there are multiple. There are multiple obstacles. So first of them is health. Then we also have some barriers when we talk about the education of a girl child, and also the security environment in UP or in India in general. So besides that, so I'll just take them one on one. So when we talk about the health of a girl child, even now, more attention is paid to the health and nutritional needs of a male child. And as we've seen that women and adolescent girls are dealing with malnutrition. So that is one aspect that is still not being properly has been taken care of. So secondly, education. We've seen that the girl enrollment ratio in the primary and even secondary medium, that is good. But when we talk about the higher educations or in enforcement in STEM, especially when we talk about science tech, so there the enrollment is quite low. So that is poor. That needs to be taken care of. And so third, the security environment. That is also because of the attitude and inertia in our society, that parents don't want their girl child to move to far off places to get an education because of security concerns. So that needs to be taken care of, so that schools and colleges are established at even near rural centers, so that the girl child there won't face a disadvantage. Government of Uttar Pradesh is taking a lot of initiatives to improve its economy. Yes, sir. So one major initiative that they have taken is about the inclusive development of all the districts. Yes, sir. Can you recall that initiative of the government of UP? They are trying to, yeah. So one of the schemes that they are trying to boost the local economy, and so one of them is one district, one product. Okay. So by promoting a product and associating it with the district, they're trying to create a brand image, and they're trying to boost the local economy. For example, all the if we talk about, for example, in Lucknow, if we talk about the Zardozi and the chicken curry work, so the local economy and the artisans associated with the work, so they'll be benefited. So that is what the government is trying to do. So black pottery is the ODOP product of which district? So black pottery, I'm not sure. So I cannot recall it right now. Sorry. And brass work? So there are brass utensils, and there Muradabad, I guess, is of brass utensils, and so despite taking so much initiative for the overall development of the economy, yes, sir.
What is the per capita income ranking of Uttar Pradesh? Sir, I'm not aware of the exact rank. It is 28th actually. Yes, sir. And what is the GDP of Uttar Pradesh? So it's 20.48 lakh crore. 20 rupees 20.38 Yes, sir. trillion, Yeah. right? Yes, sir. So, what do you think? Why do you think, like, taking so much of initiative by the government of UP, still we are, doing very low in terms of the per capita income? What could be the basic reasons for this? So we are a hugely populous state. Our population is the largest in the country. As per census 2011, it was 19.9 crores. At present, it is around 24 crores. And our economy is largely agrarian still, and most of the areas are still in the developing stage. So that is one of the reasons, I guess, why our per capita income, despite we are on its way, but still sometimes. So you see population as a major challenge for the Uttar Pradesh, not asset. So it has both its pros as well as its cons. So what is your stand? So I believe if we invest in vocational training and in improving our human resource, we can use it as an asset, and it will definitely be an advantage. To harness the benefit of demographic dividend in Uttar Pradesh, Yes, what will be your two major suggestions? So first, we'll have to, as per the National Education Policy 2020, we could see that we could opt for vocational training after class 6th, after class 8th, so that even if. So focus on skilling. Yes, sir. So skilling And is second? So second, I'll say, since we can utilize the girl population, sir, Okay. so that attention can be paid to their education and their enrollment in higher classes, higher education. Are you aware of the recent data released by the agencies on the unemployment rate of Uttar Pradesh? Are we doing better or UP is going down? Sir, I'm not aware of it. I'm sorry. Sir, Okay, July to September data for 2023 has been recently released. Day before yesterday only data has come out. Sir, And there is a change from 3.7 to 2.6 now. okay, sir. So unemployment has gone down for 15 years Yes, sir. above age group. Okay, sir. So how do you see this as a contribution of the Uttar Pradesh government in this? So the employment rate is going down. More So- people are getting enrolled. So they're contributing more to the workforce. So we have a large population. Around 56% of our population is in the working age group. Okay. So more people are contributing to the workforce. By To the that, sir. workforce. Yes, So you want to finally vouch that the larger population may be in the advantage of the state. yes, sir. Right. Okay, let's come to some international issues that are happening right now. Yes, sir. And there is a conflict going on between the Israel and Gaza. Yes, sir. And we also know there is another conflict going on around the world between Russia and Ukraine. Yes. So how they are related in terms of geopolitics? Sir, Or otherwise, I mean, you may take the otherwise stand also, there is no relation between them. Recently we've been seeing that our world is moving from a unipolar world to a multipolar world. Now we can see that conflicts are happening in different places, and there are multi-partner alliances that have been happening. Rather than a war between Russia and Ukraine, I guess the war was largely between Russia and Western-backed Ukraine Okay. because of its proximity and its it was trying to get membership into NATO. That was the final straw why I guess Russia took his. Okay, let's talk about the role of Iran in this. So we see that US has been against Iranian nuclear program, and in the recent years the relationship has taken a sour turn. So if we talk about the Israel-Gaza war, especially if we see the recent attacks on Indian-linked ships in the Red Sea. Cargo ships, okay. Yes, sir. So we could see that the militants, the Houthi militants of Yemen, have been backed by Iran, and they are against the Israeli stand in the war. So that is Why this zone, that particular zone of ocean, Yes, is sir. so important for the international trade? So it reduces the travel time from Asia to Europe, and it is a very busy sea link. So Does it falls on a very important canal? So Suez Canal, sir. Yeah. Yes. So it connects it. Now the ships are being diverted through the Cape of Good Hope
I think, and so now the canal basically reduces a lot of time and costs. Okay, I got your point. I just put last one thing more to you, Yes, sir. and I'm talking about the controversy, and the controversy pertains to the Places of Worship Act. Places of Places of Worship. Places of Worship Act. Yes. 1990. worship act. Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. Yes. Okay. So again, it is in the news. Yes, sir. After Gyanvapi, Yes, sir. this is again in the news. Yes, So what is the roots of this controversy related to the Places of Worship Act? So, as far as I'm aware, there are certain places that have been claimed by people of different religions, and for example, you could see in Gyanvapi and also. Okay, what is Places of Worship Act? Let's start from there. I cannot. Not a problem. It happens. So over to you. अब देखो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की प्रोसेस यूपी में चल रही है, पूरी ऑल ओवर इंडिया चल रही है। Yes, sir. कहीं कहीं ऐसे कोई एग्जाम्पल आ रहा है इसमें लग रहा हो कि महिलाएं अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं, जनरल एग्जाम्पल्स ऐसे हो गए हो? सर हमने कुछ देखा है, कुछ इंस्टेंसेस थे डाउरी एक्ट में जहाँ पे ऐसा पाया गया बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद कि डाउरी के गलत एलिगेशंस लगाए गए थे, तो उस पर फिर ये बात भी आई कि अच्छा मानिए आपको एक एसडीएम बना दिया जाता है, जी सर। इस चीज़ के आप एसडीएम बन जी गए, सर। डिप्टी एससी बन गई मान जी लीजिए, सर। और एक आपको न्यूज़ आती है, आपको अपने पता चलता है सबऑर्डिनेट से कि एक गांव में कास्ट रिवोल्ट हो गया, दो जातियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जी गया। सर। उसी समय साइमल्टेनियसली एक न्यूज़ आती है कि एक गांव में हिंदू मुस्लिम के बीच में हो गया, एक कम्युनल हो गया। जी सर। अब दोनों गांव के बीच की दूरी इतनी है कि आप एक ही जगह जा सकती हैं, 20 किलोमीटर का लगभग डिफरेंस है, तो जी पहले सर। आप कहाँ जाएंगे, क्यों? सर मैं अगर मेरे सबऑर्डिनेट्स होंगे या कॉलीग्स होंगे, मैं उनकी थोड़ी मदद लेके सर मैं एक ग्रुप को वहाँ भेजूंगी और एक ग्रुप को यहाँ हैंडल आप करूँगी। कहाँ जाएंगी, मैं ये जानना चाहता था, आप कहाँ जाएंगी? तो कहीं नहीं जाएगा, कुछ लोग यहाँ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ जाएंगे, सर आप कहाँ जाएंगी? सर मैं थोड़ा रिलीजियस जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा मैं वहाँ थोड़ा अटेंड करूँगी। क्यों? सर मुझे ऐसा लगेगा कि ये कास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रॉब्ली एक विलेज में सेंटर्ड है, तो प्रॉब्ली यहाँ पे ही रुक सकता है। रिलीजियस का मामला अगर थोड़ा बिगड़ा तो शायद वो और भी एडजॉइनिंग रीजन्स में जा सकता है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। अच्छा, अक्सर ये देखने में आया कि जो जितनी भी वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज होती हैं उनमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है जनरली, लिटरेसी रही हो, अवेयरनेस की कमी रही हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ एज ए एसडीएम आप कैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगी? सर थोड़ा मैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो आपकी बॉडीज़ हैं, लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको थोड़ा मैं इन्वॉल्वमेंट उनका लूँगी कि वो थोड़ा घर घर जाके सोसाइटीज़ में जाके और औरतों का इनरोलमेंट ला सके, अवेयरनेस थोड़ा बढ़ाएं, उनको भी जागरूक करें, उनको अपने साथ इकट्ठा करें। और ऑफिस लेवल पे जो आपके जो वर्किंग हैं वुमेन, उनका भी इन्वॉल्वमेंट मैं थोड़ा लूँगी कि वुमेन टू वुमेन बात थोड़ा ज़्यादा बेटर जाएगी, और ये सब इनिशिएटिव्स लेके थोड़ा मैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 2049 तक इंडिया डेवलप कंट्री बन जाएगा, इट इज़ रियली पॉसिबल और इट इज़ ए ड्रीम? सर वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एट प्रेजेंट। हमने बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया है 2006 से। डेवलप बनने के लिए क्या इंडिकेटर है? ऐसा इंडिया ऐसा क्या कर दे, कितनी इकोनॉमी बन जाए, ऐसा क्या कर दे कि हम इसे डेवलप कंट्री कहेंगे? ऐसा क्या हो जाएगा 2049 तक? क्या टारगेट हम अचीव कर लेंगे? सर हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। हमारा डिजिटल इंडिया भारत भी था, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत था। तो सर ये सब चीज़ें हमने अब देख भी रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े इम्प्रूव भी हो रहे हैं। आपकी जो फॉरेन जो फैक्ट्रीज जो कंपनीज हैं वो भी सेटअप कर रही हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स धीरे धीरे, चाइना से थोड़ा करके। हमने एप्पल के केस में देखा, सैमसंग के केस में देखा। तो सर मतलब वी आर वेल ऑन आवर वे, और हमारे पास तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी एक बहुत बड़ा असेट है अगर हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें, जिसको यूज़ करने के लिए हम लोग स्कीम्स भी हम लोग मतलब चला रहे हैं। तो सर आई गेस तो डेवलप बनने के लिए कोई टारगेट रखे होंगे ना कि इतने की इकोनॉमी हो जाए, इतनी लिटरेसी हो जाए। सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, ये तो इकोनॉमी का इंडिकेटर हो गया। जी सर। तो डेवलप केवल इकोनॉमी से थोड़ी ना बन जाएंगे। पॉवर्टी इरेडिकेशन कितना होना चाहिए, सर एसडीआई इंडेक्स कितना होना चाहिए, पता चला आदमी इंडिया एसडीआई 125 पर है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई, तो क्या हम डेवलप कर देंगे इंडिया को? नहीं सर, नॉट इन द कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक इंडिया की या यूपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी समस्या बताई जाए, एक दो आइडेंटिफाई कर पाए आप?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब बोलेंगे उसका सब पॉपुलेशन एक थोड़ा जो अभी भी पॉवर्टी में रह रही है वो एक काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे हम अगर जैसे लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं तो वो भी एक उसका ही एक ऑफशूट है, क्योंकि लोगों के पास पेट भरने का वो नहीं अच्छा, हो रहा है। एआई का यूज बता दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, या आप अपने जल निगम में एआई थी तो उसमें आप कैसे यूज करती है एआई का? सर एआई में आता क्या है पहले, ये कि तीन चार कंसेप्ट मुझे बता दीजिए क्या क्या आता है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि जो ह्यूमन जो न्यूरल जो प्रोसेस है उसको मिमिक करता है और डिसीजन मेकिंग पे आता है। डेटा को यूज़ करके, जो उसके पास डेटा अवेलेबल होता है उसको यूज़ करके वो अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करके फिर आगे फिर वो वैसे डिसीजन मेकिंग करता है। तो एक ह्यूमन ब्रेन को एक तरीके से मिमिक करता है। और सर जल निगम की या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की ही हम बात करें तो अगर हम जैसा उसमें डेटा डालेंगे, तो जैसे अगर मेरे केस में सर जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन था, तो जैसे आपको वाटर लेवल देखना है या आपको डेटा मतलब देख के, जैसे हम लोग उसमें डेटा फीड करके वो कर सकते हैं कि किस में कितना रिक्वायरमेंट है, वाटर नीड कितनी है, एक्सपैंड करने के लिए क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट रिवर्स को क्लीन करने के बहुत से एफर्ट कर रही है जी सर, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड में टेम्स को उन्होंने क्लीन कर लिया, जर्मनी ने कर लिया, हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों और क्या करना चाहिए? सर इसमें दो चीज़ें होती हैं कि हम क्लीनिंग भी करें और जो पोल्यूशन एट सोर्स है वो भी कम होना चाहिए। तो सर हम लोग का हमारा जैसे गंगा जो प्लान था उन सब के तहत ODF जो था उन सब के तहत हमने क्लीनिंग पे तो थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, पर पोल्यूशन एट सोर्स बाय एंड लार्ज अभी भी कम नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ का जो पोल्यूशन है वो अभी भी एफ्लुएंस अनट्रीटेड उसमें डाले ही जा रहे हैं। यमुना के केस में हम देख रहे थे, कोविड के समय हमने देखा कि नेचर इतना अच्छा रेगुलेटर है कि 4-5 दिन में ही वाटर काफ़ी क्लीन हो गया था और इनफैक्ट डॉल्फिन्स और ये सब भी मिलने को देख रहे थे। तो हमको दोनों चीज़ों का ध्यान देना है, हमको पोल्यूशन एट सोर्स को भी कम करना है, थोड़ा जो रेगुलेशंस है उसको स्ट्रिक्टली इम्पोज करना है। फैक्ट्रीज अभी भी अपना एफ्लुएंट ट्रीट करके नहीं डाल रही हैं। और दूसरा सर तो क्लीनिंग हमको देखना ही है, पब्लिक अवेयरनेस और एक जागरूकता तो लानी पड़ेगी, बिहेवियर चेंज हो गया है। अच्छा, मान लीजिए आप कहीं पे SDM है तो वहाँ पर कोई एक न्यूली अपॉइंटेड महिला लेखपाल आपसे शिकायत करती है कि एक पर्टिकुलर नायब तहसीलदार हैं वो उसको इंडिसेंट SMS भेजते रहते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, और फिर वो एक दिन किसी व्हीकल में जा रहे थे ऑफिशियल वर्क से, उन्होंने उसे टच करने की भी कोशिश की। जी सर। वो रिटर्न में आपको एप्लीकेशन देती है, नाउ व्हाट वुड यू डू? सर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी विशाखा गाइडलाइंस मतलब दी हुई हैं। तो सर एज पर द गाइडलाइंस मैं एक ऑफिशियल इंक्वायरी थोड़ा सर करूँगी इस्टेब्लिश कि प्रॉपर्ली एक बार थोड़ा इंक्वायरी हो कि एग्जैक्टली इंसिडेंट क्या हुआ था कि, और एट द सेम टाइम सर मैं मतलब जो और भी फीमेल वर्कर्स होंगी उन अपने लेवल से भी मैं थोड़ा पूछूंगी कि क्या इस बात की क्रेडिबिलिटी है, और अगर उनकी और कुछ अगर दिक्कतें हैं तो उसके लिए मैं सर प्रॉब्ली एक वर्कफोर्स या मेरे लेवल पे मैं बोलूँगी कि आप लोग और भी अपना कंसर्न्स बताइए, और फिर जो इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी सर मैं उसके हिसाब से। SMS इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आर देयर? सर अभी जो हमारा आया है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो अभी अमेंडमेंट आया है भारतीय साक्ष्य बिल सर, उसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एडमिसिबल है। तो एक बार में सर अगर वो एविडेंस मिलेगा और उसके बेसिस पे, चलिए आपने भी इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने की बात की। जी सर। तो IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिप्लेस करने के लिए जो 3 नए कानून लाए गए उनका क्या नाम है? सर एक IPC 1860 को रिप्लेस करने के लिए भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023, सर CRPC का है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के लिए है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। जब भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, कुछ अपराधों में सजा बढ़ाई गई है, तो क्या उसका पुरुषों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है और आप उसे रोकने के लिए कुछ उपाय देना चाहेंगे? सर उसमें अडल्ट्री को तो रिवील कर दिया है, तो ये तो जेंट्स और फीमेल्स मतलब दोनों के लिए ठीक है। जेंडर और चलिए आप मुझे यूपी के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताइए जहाँ पर प्रति 1000 मेल पर फीमेल की संख्या ज़्यादा है 1000 से। सब मेल्स की फीमेल से ज़्यादा है। हाँ, जनरली तो मेल की ज़्यादा है जी, पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है। सर जौनपुर एक है जहाँ पे हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो है यूपी में।
और सर इसके अलावा चलिए आप मुझे भी बताइए, आपके पड़ोसी राज्य बिहार में क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ ऐसे उपाय लागू किए गए जो आप यूपी में भी लागू करना चाहेंगे? सर बिहार में सर एक मुझे प्रोग्राम पता है कि एक IPS ऑफिसर थे, उन्होंने एक नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से एज ए पॉलिसी मेजर, लाइक एज वीमेन रिजर्वेशन, लोकल गवर्नमेंट आर इन जॉब, समथिंग लाइक दैट. सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द, मुझे Okay, thank you. थैंक यू सर.